A very good evening to all. It's an honor to be a part of the webinar series. And a big thank you to Bharti Foundation for inviting me over. As already mentioned by Debashri, the topic of my webinar is empowering student engagement and what are the strategies that can promote student participation. Well, before I move forward, I think it is very important we answer the question that why is student engagement so important? Why does the principal always say, please engage your students? Teachers, workshop people always say, please engage your students. So why is it that student engagement is important? Well, student engagement promotes deeper understanding of the concepts. It also promotes children to share their ideas, ask questions, which perhaps they would not have asked in a normal circumstances, and also promote critical thinking skills. Well, most important is when students are engaged, they are able to apply what they have learned in the classroom to real life situations. Now, if these are the benefits of having student engagement in the class, then why is it that some of us are not able to do it well? Or why is it that some of us are able to do well? Hence, as a part of the webinar, I would be discussing strategies for student participation. But before I move forward, let me tell you that I'm a postgraduate in applied mathematics and education. And I took up mathematics because of my mathematics teacher, Mrs. Nirmala Sharma. She made the classrooms fun. She taught mathematics and she used to make classrooms so fun, fun-loving, absolutely. All of us loved doing maths. And she had a fantastic sense of humor. And that's what made me take up mathematics as a subject. So let me ask you a question. I'm sure each of you has a favorite teacher. So what is one quality of your teacher which made him or her your favorite, whether in school, whether in college, whether in university? The question is put up in the chat window, and also you can scan this QR through your phone and answer the questions. Come on, let me see the participation. Let me just energize the crowd. We have 165 of us. So let's see the answers coming up the screen. So we have people answering pretty fast. So let's see the answers coming up. And people are taking time to type. It's okay. I think to even think of one quality of your favorite teacher takes time to think. It takes you time. She always heard my queries and encouraged me to think out of the box. Very good. Listening skills of a teacher. She always heard my smile, most important quality of a teacher to be successful in the class. My teacher is being kind, empathetic. True. A teacher who's empathetic wins the hearts of the students. Punctual and subject command. No teacher can get any respect from students unless she has the command on her subject. Kind, very, very important. Her empathy and connect, very true. My teacher had great patience in listening to all the things we shared. So true. The teacher has to be a very patient listener.
So let's hear what made your teacher your favorite teacher. I think some of them are pasting it into this chat window. A good listener and creative. Yes, it is very, very important the teacher should be creative because she gave attention and checked my homework. Very true. When you see that the teacher is making an effort to help you correct your mistakes, I think that's what makes the teacher special. Active and creative. Yes, creative quotient is required. Don't you think with the kind of bahanas which student come up with, you have to be very creative in your answers, very patient and empathetic. And yes, your lesson plans have to be creative if you have to engage your students. Politeness of the teacher. Polite and creative, non-judgmental and unbiased attitude. So true. Everybody likes a teacher who's unbiased and non-judgmental. For the benefit of everyone, आप ये क्वेश्चन चैट विंडो में दिया हुआ है, उसको आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी टीचर फेवरेट क्यों थी. Provided a safe space. Connect with kind and non-judgmental. Okay. And to notice even minute things about students and appreciate always. Being supportive and motivating command on the subjects. Understanding and listens patiently. Okay. Two-way communicated. Her patience while and listens patiently. Okay. She made me comfortable and confident. Very true. A teacher who encourages, who builds confidence and leadership skills in the other student is considered as a fantastic teacher. Her patience being in the class and a subject, her connectivity with the students, easy to approach, critical thinker. Very true. Let's see some more answers before we go forward. Monica, can you please scroll the screen? Okay. So I've read quite many. I've read some in the chat window also. So friendly behave and eye contact. This is very important. I think a very important point that there is an eye contact with the child. Very, very important. Method of teacher. Okay. All right. So let me summarize what you have been telling. And so, with different qualities that you mentioned that are part of the teacher. But if you analyze most of these qualities, these are all linked with positive student-teacher relationship. Please understand that one of the most important quality of a teacher in the classroom to empower student engagement or to make students participate in the class is the positive environment that you build in the classroom. Simple things that we don't realize. For example, the student-teacher connect. It is so important. It begins the moment the child wishes you. How do you wish back good morning? Do you look at the child when the child wishes you? I do that. In the morning, if any child is wishing me, I at least take a fraction of a second to look at the child and say good morning. The very fact that the teacher took 1 second to look at the child shows the child that this person cares for me. And I do it with all students, not that only my students who are teaching me. Also, when you should know the names of the students whom you're teaching, please, even if it's an exercise, please do it. But know the names of the students who are
whom you are teaching. And class teachers, when you take the roll call, please take the roll call calling the child's name. Don't call roll number 1, 2, 3. Call the name of the child. When you call the name of the child, for example, suppose I say Rita, I just look up and I look down. How much? It takes only 1 second to look up and 1 second to come down. But the very fact that you spoke the word Rita and you looked up and saw the child in the eye, that says millions to the child. It tells the teacher that it tells the child that my teacher cares for me. That is why she looked at me. Do you know that there was one teacher who gave this feedback? My teacher looked at me in the eyes. It is very, very important that you look in the child's eye when you're speaking to her. Don't look here, there, and everywhere, but the child when you're talking to the child. So that's one important thing. Also, the way you interact with the children in the class is a very clear indication of how students bond with you. If you are pulling down some children in the class or being nasty with some children in the class, then you be sure the other children also will not bond with you, because they're seeing you being this with the other children. So it's very important that you keep the child's self-esteem in place. You look at the child and you understand that if I respect the child is going to respect me. The next strategy that we use in Satpal Middle School for bonding, of building a positive student-teacher relationship, is quality circle time. I'm sure each school, whether in a village, whether in a town, whether in whichever state, each of us normally, when we have to talk something, when we have to celebrate, we sit in a circle. So when you sit in a circle, the teacher is part of the circle. So you're telling the child that I'm not being the preacher, I'm not hierarchical, मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह सर्कल में बैठी हूं. और हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे से बच्चों से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो कोई डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, जो सीनियर क्वेश्चंस बच्चे होंगे उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे. फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चों के साथ आप पूछ सकते हो कि आप कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप बहुत शुक्रिया, बहुत थैंकफुल हो, फॉर व्हाट आर यू मोस्ट थैंकफुल. तो जब बच्चे एक दूसरे की एक करके बात करते हैं कि भाई आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, जो बाकी बच्चे हैं इन द क्लास, जो थोड़े बच्चे हैं जो हमेशा क्लिप करते हैं, वो सब भी सीखते हैं कि इतना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, क्या जरूरत है हमको क्लिप करने की. तो आपने पूरी क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जस्ट बाय डूइंग सम सिंपल एक्सरसाइज लाइक दिस. जब सीनियर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो नॉर्मली हम बच्चों की बुराइयां ज्यादा ढूंढते हैं, ना कि अच्छाइयां. अगर हम ऐसे क्वालिटी सर्कल टाइम में हम ऐसा क्वेश्चन पुट अप करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जब हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, और पता है ये जबरदस्ती नहीं होता कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे पे जाना चाहिए, एक ना टॉय या कोई भी आइटम लिए जाती है, एंड जब मैं बोल रही हूँ ये आइटम मेरे पास होती है, जो भी बच्चा कहता है कि मैंने बोलना, उसको वो टॉय पकड़ाया जाता है और या वो आइटम पकड़ाई जाती है, दैट बिकम्स अ माइक, स्पीकिंग माइक. तो इस तरह से एवरी चाइल्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड आंसर. तो ये नहीं कि my turn has come so I have to speak. It's not like that. Every child can speak at their own pace. So what happens is, I think let me share a story with you. Teachers, I will be interacting partially in Hindi, partially in English, because there's a mixed crowd of audience over here. I've been requested to mix both the languages so that it's much more comprehensible and connectable with the others. So एक बच्चा था जो बहुत ही शरारती होता था, बहुत ही इनडिसिप्लिन था. तो बच्चे जो इनडिसिप्लिन होते हैं, हम नॉर्मली सोचते हैं कि ना ये तो किसी काम का नहीं है, हर क्लास में तंग करता है. तो हम एक क्यूरियोसिटी सर्कल में बैठे थे और हम एक दूसरे से पूछ रहे, बच्चे को बोल रहे थे कि व्हाट मेक्स यू सैड. सो जब बच्चे आंसर कर रहे थे
तो एक बच्चे ने बोला कि आई एम सैड बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो नॉर्मली जो बच्चे बुली करते हैं, जो इन तंग करते हैं क्लास में, उनका कुछ ना कुछ ऐसा सैडनेस का क्वेश्चन रीजन होता है। तो जब वो बच्चे ने बात की तो बाकी बच्चों को महसूस हुआ कि परहैप्स ये बच्चा हमारे साथ इसलिए इस तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि शायद हम लोग इसे अपना दोस्त नहीं बना पाए। सो उस दिन के बाद मैंने क्लास में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि हर कोई खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहता है। So these are small examples by which you can bring a difference in the classroom. Next, when I talk of spiritual well-being, see, whether you go to the mandir or whether you listen to the part or whether you go to the gurdwara or the church or the mosque or wherever, whether you listen to some guru on TV, any person who makes you connect with your own inner self is always respected. You like to listen to that person. So, there is something called क्लासरूम माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बच्चे को उस मोमेंट में उस जगह का ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी बैठे हुए हो एंड यू जस्ट आप अपने नॉस्ट्रिल को फील करते हो, सांस आते और जाते हुए फील करते हो, कोई डीप ब्रेथ आउट वो सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी फिंगर रख के नोज के पास आप ब्रीथ करके देख, आप नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग को फील कर रहे हो, तो ये आपका पूरा अटेंशन इस जगह पे आया हुआ है। तो इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये ऐसे भी हो सकता है कि क्लास में जब दो डबल पीरियड्स होती हैं तो एक क्लास की ब्रेक के लिए बच्चों को बोलो डीप ब्रीथ करने के लिए 2-3 बार और देन कम बैक। इस तरह से जब बच्चे का मन भटक रहा है तो यू कैन गेट इट बैक टू द पॉइंट वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। दैट इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन द क्लास। The next thing that I would talk about is buddy classroom. When you have a buddy classroom, आप भी क्लासरूम्स में करते होंगे, ये नहीं कि आप नहीं करते होंगे। बच्चों को मौका दो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दो ग्रुप में बैठ के सीखने के लिए। यहाँ पे आपने देखा है एक बच्चा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है बाकी बच्चों के लिए। जब आप किसी बच्चे को प्रमोट करते हो, बाकी बच्चों को लगता है कि मैम ने हमको भी प्रमोट करना है, तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। ये नहीं कि सेम बच्चे को प्रमोट करो, ऑब्वियसली हर बच्चे को चांस दो। पूरा एक साल होता है आपके पास, हर बच्चे को एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट आप दे सकते हो पूरे साल के अंदर। सो दीज स्मॉल एक्सरसाइजेस बिल्ड अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। मोनिका, नेक्स्ट स्लाइड। जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो पहला पहला स्टॉपिंग पॉइंट ये आता है कि मैम देयर इज सो मच ऑफ इनडिसिप्लिन इन द क्लास, दिस इज नॉट पॉसिबल मैम। आई मीन you can't take the class when you're trying to connect, build a positive student teacher relationship. May I tell you, I have just one question. Actually, there are three people who have raised their hand. Just sorry to interrupt you. This is for Poonam Kumari and Nikita Kashyap. There is question answers at the end of the session. So kindly hold your question till that time. और हम वापस में जैसे मैम खत्म करती है हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। सो फॉर नाउ आप लोग अपने क्वेश्चंस को होल्ड पे रखिए and we will definitely get back to your questions as you have raised your hand. Sorry ma'am, you can continue. It's okay. Yeah. So मैं भी क्लासरूम में इनडिसिप्लिन सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। एक टीचर को काइंड, केयरिंग, सपोर्टिव होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फर्म होना चाहिए। एक टीचर को दोस्त नहीं बनना चाहिए। यू शुड बी फ्रेंडली बट नॉट फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप अपनी क्लास में हर बच्चे से अपने डूज एंड डोंट्स बनवाइए प्लीज। क्लास साल के जो शुरुआत में 1-2 दिन होते हैं, ये सब काम बच्चों को कनेक्टिंग के काम में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कनेक्ट प्रोग्राम नाम दे दीजिए, लेकिन 2 दिन बच्चों के साथ गुजारिए। आप उनके साथ डूज एंड डोंट्स बनाइए, बच्चों को बोलो क्या आप करोगे और क्या नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्या होना चाहिए। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आप उसी टाइम डिसाइड कर लो।
और क्लासरूम में पेस्ट करो ताकि हर बच्चे को पता हो कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना. What happens is when you do this, you are bringing ownership to the children. बच्चे को पता है कि मैंने लिखा है तो अब मुझे ओबे करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज, ये जरूरी नहीं कि एक बच्चे ने मॉनिटर बनना है. नॉर्मली इन स्कूल्स आई हैव सीन दैट देयर इज वन मॉनिटर and then after 2 months one monitor will change. In some schools monitor only doesn't change. I have my in my school we don't do this. What we have is we prepare a student empowerment chart. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि एक जना क्लासरूम मॉनिटर बना हुआ है, एक स्मार्ट क्लास, जो स्मार्ट क्लास बोर्ड होता है उसको ऑफ करना है, उसको देखना है कि कोई बच्चे को हाथ नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर करना है कि लाइटें फैन बंद करके जानी है, कलेक्शन जो भी आप क्लासरूम डायरीज कलेक्ट करनी है जो भी है. तो हर बच्चे को, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे? 40 बच्चे होंगे. पूरे साल में एक एक हफ्ता भी ड्यूटी दोगे एक बच्चे को, जैसे कि 2 लोग स्मार्ट क्लास कर रहे हैं, 2 लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक एक बच्चे को एक एक हफ्ता भी ड्यूटी दोगे तो आपने उस बच्चे के अंदर एक एम्पावरमेंट जनरेट करी. So please do the student empowerment chart, a great way to engage students. Next is collaborative learning. I'm a big supporter of peer learning. जब आप बच्चों को एक ग्रुप में बिठाकर आप आपस में पढ़ने के लिए कहते हो तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक होता पढ़ने का. हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं कि बच्चों का एक ग्रुप बनता है और बच्चों को ओनरशिप दी जाती है. सपोज मैथ्स होमवर्क मिला है तो वो ग्रुप ने इंश्योर करना है कि पूरे 5 बच्चों ने होमवर्क किया है. टीचर ने सिर्फ ये देखना है कि पूरे ग्रुप ने सम किया है कि नहीं. अगर कोई सम नहीं समझ आ रहा तो उस ग्रुप में से कोई बच्चे ने समझाना है. नहीं तो फिर क्या होता है कि वो नहीं समझ आ रहा, 5 को नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप टीचर से पूछिए कि हाउ इज दिस सपोज टू बी डन. डू यू नो दैट व्हेन स्टूडेंट्स टीच, they connect with the students far better than you. So when you teach, ask the student to teach, you are empowering the child. The child's subject competency increases. So please get into the culture of collaborative learning. Next is dear, that is drop in everything and read. एक reading engagement अपने स्कूल के अंदर जरूर रखिए. और जब बच्चे को बोला जाता है कि बुक पढ़ने के बाद आप उस बुक के बारे में एक पैराग्राफ एटलीस्ट बात कीजिए कि आपको क्यों अच्छी लगी. इस तरह से आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो एंगेजमेंट के लिए. एक नॉन थ्रेटनिंग, एकेडमिक्स को छोड़ के स्टोरी बुक को लेके या कॉमिक को लेकर आपने नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी है एंगेज करने की. सो ये एक बहुत ही खूबसूरत तकनीक होती है बच्चों को रीडिंग के थ्रू एंगेज करना. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंक्लूजन. What do I mean by promoting inclusion? Please, I do not mean only children with learning disabilities. That is not my meaning of inclusion. एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं. कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़े मीडियम स्पीड पे सीखता है, कोई बिल्कुल धीरे सीखता है. तो क्या आप अपनी क्लास में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हो कि जिसमें हर बच्चा सपोर्टिव फील करे कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, चाहे मुझे लाइब्रेरी पीरियड में बुलाया जा रहा है या स्पोर्ट्स पीरियड में बुलाया जा रहा है. स्पोर्ट्स पीरियड टीचर का बच्चे का कभी मत लेना. ये बेस्ट तरीका है बच्चों से अपना रिलेशन खराब करने का. चाहे जो मर्जी हो जाए, बच्चे की स्पोर्ट्स पीरियड प्लीज मत लेना. आपका पूरा किया कराया काम वेस्ट जाएगा, क्योंकि बच्चे की जब आप स्पोर्ट्स पीरियड लेते हो तो बच्चा फिर आपके अगेंस्ट हो जाता है. सो एज आई सेड, एक स्पेशल एजुकेटर की अगर जरूरत है तो स्पेशल एजुकेटर को बुलाइए, अगर काउंसलर की जरूरत है तो काउंसलर को बुलाइए. पर देखो कि हर बच्चा एक पेस में चल रहा है. सिर्फ वो टॉपर वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू टेक द एंटायर क्लास विद यू. नेक्स्ट इज आउटबाउंड ट्रेनिंग. आप और मैं भी जब बच्चे थे तो हमने जब ट्रिप्स पे जाते थे या ग्राउंड्स में खेलते थे, हमारी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती थी, ना कि जब क्लासरूम में होते थे. तो इसलिए आप जब क्लासरूम के बाहर अपनी कोई क्लास लेते हो, चाहे कोई एक्टिविटी कराते हो बच्चों के साथ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉट जस्ट लाइक दैट, रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट,
then you build stronger bonds with the children and you promote a lot more engagement than that would happen in the classroom system. But this does not mean that every class takes the class to the ground and say that ma'am told us that you should take the children outside, so we are going. Please अपने लेसन प्लान के अंदर वो पीरियड डालिए और अपने सीनियर से, जो भी आपका हेड टीचर है या हेड है, उसके साथ परमिशन लेके टाई अप करके फिर आप ये कर सकते हो. इस तरह हर क्लास ग्राउंड में चले जाएगी तो बिल्कुल केओस हो जाएगा. प्लीज गो नेक्स्ट. आप ये स्टूडेंट एंगेजमेंट करते कहाँ हो? ये सब कहाँ होता है? स्टूडेंट क्लास के अंदर होता है या तो क्लासरूम के बाहर होता है, या तो ट्रिप्स और फील्ड ट्रिप्स और अदर ट्रिप्स पे होता है. लेकिन ये सब कुछ स्कूल के अंदर आप करने की कोशिश कर रहे हो. सो पहली बात तो जो आपका करिकुलम है, टीचिंग पेडागोजीज है, उनको एंगेजिंग बनाइए. आप अपने लेसन प्लान में खुद इनकॉर्पोरेट कीजिए कि एक्सपीरियंशियल कोशेंट होगा. एक्सपीरियंशियल टीचिंग क्या होती है? जहां पे आप बच्चों को एक एक्सपीरियंस दे रहे हो एक पर्टिकुलर चीज का. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टीचिंग लीव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशंस in leaves, take them to the ground and show them the different types of leaves. Let them identify the different venations which are there, which will help the child to engage. Technology enabled, I think there's so many YouTube videos, there's so many softwares by which you can engage this child into the classroom. Next, you can see there are children playing with the dice. This is a mathematical table. You are teaching through Ludo, the Ludo-like game. You're teaching children counting. You're teaching children step counting. You're also teaching children the value of accepting defeat when you get it. Because, just like this, there's a snakes and ladder in the school. So when you play snakes and ladder, you can come to 99 and then you can go back to 1. So this teaches the child an important value that you have to have the never defeat attitude. So even if you come down, you have to gather up your strength and go up. शो एंड टेल आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे को करते हुए. बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दो क्लासरूम में बोलने की. जितना आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा और अपना करिकुलम ट्रांजैक्ट होगा. इंक्वायरी बेस्ड, नॉर्मली जब हम चैप्टर शुरू करते हैं हम बच्चे को बोलते हैं टुडे आई एम गोइंग टू बी टीचिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो आपने बता दिया चैप्टर का नाम. उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा आपके क्लासरूम में ना, उसको तो पता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है. आपने बोल दिया और आपने लेसन स्टार्ट कर दिया एंड देन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू पे फुल अटेंशन इन द क्लास. What you could do is, you have taught them integer systems. Then ask these people that if I put the integer systems this side and this side, and if I put a point over here, what will I call this point? So inquiry based में क्या होता है कि आप एक बच्चे को situation देते हो, उसमें बच्चे को observe करने के लिए कहते हो और वहां से आप topic का base बनाते हो. So that is called inquiry based learning. Competency based, I think हमारे पूरे CBSE, ICSE, Punjab board schools and every state school is talking about CBL, that is competency based learning. बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ different types of questions discuss हो, different types of learning methodologies discuss हो, different types of taxonomies discuss हो. Please go next. Yes, I would always believe, please make your teaching learning practices much more multidisciplinary. Now, जब मैं multidisciplinary बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो. मैथ्स सिर्फ मैथ्स के क्लासरूम में नहीं होता. आप जैसे मैथ्स लैब में गए हो, हमारा जो फर्नीचर है वो डिफरेंट शेप्स में बना हुआ है और उसके ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो ये आप हेक्सागन देख रहे हो, इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं और ये 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, आई थिंक 6 of them are there. So when you each of them is made to the measurement, तो ये बच्चा उस फर्नीचर के थ्रू ही सीख सकता है या डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू सीख सकता है. तो जब आप बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाते हैं तो उसमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू एंगेज and also for the teacher to build a bond with the students. In the right side that you can see sports integration,
The children played shot put, and some child recorded, what was the value that the child got. They made a tally bar. टैली बार के साथ उन्होंने फ्रीक्वेंसी बना लिया, और इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हिस्टोग्राम बना लिया। आपने पूरा मैथ्स, पूरा स्टेटिस्टिक्स आपने एक गेम के थ्रू पढ़ा दिया। यहाँ पे आपका, मैंने फिबोनाची सीरीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को यूज किया। हम सब कहते हैं मैथ्स इज इन नेचर, मैथ्स इज इन नेचर। एक फिबोनाची सीरीज होती है, इस तरह मेनी मेनी अदर सीरीज आर देयर। Ask the children to identify this in the environment around them. You go to the robotics lab. I think almost every school has a robotics lab or a STEM lab. So you integrate STEM with teaching pedagogy. You ask children to play games which are educational rather than to play, teach always you being the speaker. Let the children be given opportunities to speak. And most important, give children opportunities to be, leading the teaching learning process. It's very, very important. You can have clubs which are run by students, which is a great way to make all students engage, and also the teacher engage with the students. एक बात आप याद रखिए, जब आप बच्चे को एम्पावरमेंट देते हो, वो बच्चा आपको जिंदगी भर नहीं भूलता। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों को इन्वॉल्व करो। बच्चे आपके लिए हमेशा आपको ग्रेटफुल रहेंगे कि आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, स्पेशल एफर्ट बनाया लेसन को डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का। नेक्स्ट प्लीज। यस, टेक्नोलॉजी हम सब स्मार्ट क्लास, फ्लैट पैनल्स सब कुछ यूज कर रहे हैं क्लासरूम्स में, लेकिन हम कंप्यूटर लैब में भी जाते हैं। क्या हम अपनी कंप्यूटर लैब एक टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए ले सकते हैं? क्लासरूम में एक गेम है माइनक्राफ्ट, उस तरह मेनी और काफी गेम्स हैं। तो गेम्स के थ्रू आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, साइंस पढ़ा सकते हो, हिस्ट्री पढ़ा सकते हो। एक बच्चा है जिसने पूरे माइनक्राफ्ट में इजिप्शियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस बनाई हुई हैं। तो गेम्स के थ्रू बच्चा उस चीज को सीख रहा है। सो व्हाट कैन बी मोर एम्पावरिंग देन हैविंग लर्निंग गोइंग थ्रू games, or games being used as a teaching aid. Next, for mathematics, for teaching coordinate geometry, for teaching integer system, for teaching trigonometry, for teaching graphs, for teaching functions, you have a software called GeoGebra. You can use the software very effectively in the classroom to explain, to give a visual impact of the concept that you're talking about. एक another software है Thingling. वहां पे ना आप इसको, जैसे हम लिंक देते हैं, लिंक से आगे कोई जगह पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया है और उसके ऊपर आपने देखा ये स्टार्स बनाए हुए। सो व्हेन यू क्लिक एट द स्टार, अ कंप्लीट डिफरेंट फॉर्म ओपन्स। So this way you are engaging your students through multimedia so that all the senses are engaged. You have OneNote stickers, you have Kahoot. Kahoot एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आई थिंक सब लोग क्विज करते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने कंप्यूटर पे क्विज खेलते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, माइंड यू, दे आर सुपर इंटरेस्टेड। एक टीम ए टीम बी बना लो एंड बच्चों को दे दो, आप देखो किस तरह से पढ़ाई होती है। Adobe Express, where children can work in collaboration to create projects. आजकल कोई भी बच्चा एक दूसरे के घर नहीं जाता प्रोजेक्ट करना, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसमें वो शेयरिंग पॉसिबिलिटी होती है जहां पे बच्चा टुगेदर ऑनलाइन आके टुगेदर एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। सो यू कैन यूज Adobe Spark and so many other tools which are available. Next, please. Next, आपको इनफैक्ट एज अ टीचर, when somebody tells you that you are the designer of the child's future, कि आप बच्चे का भविष्य का डिजाइन करते हो, तो उसमें क्या है कि आपको एक बड़ा पर्पस नजर आता है कि मैं सिर्फ एक क्लासरूम में पढ़ाती नहीं हूं, मैं एक बड़े पर्पस से जाती हूँ क्लासरूम में। सो सिमिलरली जब आप बच्चों के साथ एक पर्पस लेते हो जो अपने से बड़ा हो, जो एक नेशनल लेवल पे हो, तो बच्चों को लगता है कि
मेरे ये करने से मैं अपने आप को ही नहीं खुश कर रहा, मैं एक नेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो जैसे कि हमने, ये आप भी करती होंगी ये सब चीजें, यू हैव आत्मनिर्भर फेस्ट, बच्चों ने कपड़े तय करना, फोल्ड करना, या उसको आयन करना या प्रेस करना, ये सब कुछ हमने बच्चों को सिखाया हुआ है। वी हैड रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, we had Swachhta Divas and Swachhta other projects related to that. We had एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें पता हमने क्या किया कि हमने हर क्लास को जूनियर स्कूल में पीवी सॉरी एलकेजी और यूकेजी में हर सेक्शन को एक स्टेट दे दिया, ठीक है। तो फिर वो स्टेट, हर क्लास ने अपना एक शो एंड टेल शोकेस किया, जहां पर उन्होंने, उस बच्चों ने उस स्टेट के बारे में सिर्फ प्रदर्शन दिया। So you had only that group of children performing. So you got them to think of, and उसके बाद उस बच्चा दूसरी क्लासेस में जाता था ताकि वो दूसरे स्टेट्स के बारे में ही सीखता था। So you have used a platform bigger than life for making the child understand the concepts. So आप अगर mygov.in पे जाओगे, I'm not promoting any government, but I am telling you, mygov.in पर इतनी एक्टिविटीज हैं, इतने प्लेजेस हैं बच्चे को, जो जिस जहां पे करने से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो बच्चे के करियर ग्राफ में इंपॉर्टेंट होंगे। Not only that, the child can win, if not anything, at least you get a letter from the government to say, well done, you have done this well. So please, when you make your activity calendar, try to align your activities in sync with the national initiatives. That way, you are serving a bigger purpose than just the classroom transactions. Please go next. No, next, please. Also, I think we have, Satya Bharati, quite many Satya Bharati schools who are also connected. You are doing a commendable job connecting with the community. आप जो कर रहे हो शायद हम लोग नहीं कर पा रहे, आप बहुत ही एक ब्रिलियंट काम कर रहे हो, जहां पे आप हर तरह के बच्चे के साथ कनेक्ट करके उसको, यहाँ तक कि स्कूल बुलवा के स्कूल में उसको आने के लिए प्रोत्साहित करना, एंड देन यू टीच इन द क्लास। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। All teachers in all, even the private schools, do a commendable job when they connect the teaching learning with a bigger purpose than just the classroom transaction. So like you go to, you have, special walks that are taken out, or plantation drives, or your children go to specially abled children, or they go to some other school to teach those children, or they try to make, they try to take online classes for those schools which do not have provisions for resource persons. You are integrating all this. You're holding campaigns for anti-abuse or anti-bullying, etc. So you are connecting yourself with this purpose which is higher than the classroom. तो इस तरह से आप बच्चों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाते हो, क्योंकि बच्चा एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में, नॉन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, और जो बॉन्ड्स नॉन एकेडमिक ग्राउंड पे बनते हैं वो एकेडमिक ग्राउंड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नाउ लेट मी सी, आई मीन मैं एक टीचर हूं, तो मेरी टीचर का, आई मीन आई हैव टू शो दैट आई एम अ टीचर, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक क्विज है, प्लीज इसको स्कैन कीजिए, या तो आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड एक क्विज को आंसर करो। लेट मी सी हाउ मच you have understood of the program. Come on, come on. I'm sure we have so many of them. I'm sure each of you can connect and answer the quiz. जिस टीचर ने क्विज जल्दी आंसर किया उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली मेरी टीम आपको सर्टिफिकेट दे देगी। तो प्लीज लेट्स बिगिन द क्विज टाइम। Come on, come on. They're simple questions, not very hard.
Not the kind of question paper that you prepare. I prepared a very easy question paper so that all of you could answer it. So if it's so easy, I'm sure all of you can answer. At least you wake up from your slumber that, okay, ma'am, she's talking something, might as well answer. Monica, are teachers answering? No, not yet, ma'am. Come on, teachers. You all are all brave hearts. When you take tests of children, that time you don't think twice. Now that I'm taking a test, you're worried about it. Come on, answer. Let's see how many people can answer. Let's see others doing it also. चैट सेक्शन में मैम ने लिंक भी पोस्ट किया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये क्विज ले सकते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग ये क्विज लें, बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, आई एम श्योर फॉर ऑल ऑफ यू। They are answering. They need the initial push, which they normally everybody does. Yeah. So people have started. Yeah, the people who are commenting that they have done the test. Okay. So Let's wait for few more minutes, sure. and then I'll start the Q&A round. Good, everyone. Very good. That's like good students. Well done, teachers. I think, Monica, let the others do, and you can keep giving the certificate while we go to the question answer round, because I think I want 15 minutes for question answer. Yeah, before I go to the question answer, there's one more slide. जिस तरह से आप एक क्विज कर रहे थे और हमने आपको वो सर्टिफिकेट्स दिए, उसी तरह से अगर आप क्लासरूम में बच्चों को सिर्फ अचीवर्स को एकेडमिक्स के लिए नहीं, अगर आप उनको यूनिफॉर्म के लिए, अगर उन क्लेनिनेस के लिए, नोटबुक कीपिंग के लिए, या डेस्क क्लीन रखने के लिए, या टीम एक अच्छा, your behavior with peers, behavior with teachers, for such parameters, if you award these children, then you see a reinforcement. See, in our school we give a star and a smiley. Smiley एक improvement के लिए होता है और star अच्छे करने पर. तो जो बच्चा कभी आंसर नहीं करता, अगर वो क्लास में आंसर करना लग गया है, so उसका जो behavior, let me take a simpler example. Let me say there's a child who's always, cribbing about things. Now of late you see that there's an improvement in the behavior. Please give a smiley for behavior with peers. और जब अगर उसके स्माइलीज ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम एंड ऑफ द मंथ एक स्माइली बैच देते हैं. जब वो बच्चा बैच पहनता है, that I'm a good folk, there's a sense of pride, there's a sense of inner motivation the child has to become a good folk, which is the next level. हमने ये पॉइंट्स, जो क्लास के पॉइंट्स होते हैं, वो हाउस के साथ ज्वाइन कर दिया हुआ है. तो हमने ये ज्वाइन करके जो पूरे टोटल पॉइंट्स मिलते हैं उसमें से बेस्ट क्लास निकाली हुई है, और हर बच्चे को जो गुड फोक है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है. मैं आपको बताती हूँ, जिधर मैंने वो बच्चे की बात करी जो यू नो एक गुड स्माइली के कारण जो इम्प्रूवमेंट होता है. जो क्लास में एक बच्चा था जो किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से भी, मतलब बहुत कम चुप चुप रहता था. तो टीचर ने बहुत कोशिश की उसको एनकरेज करने के लिए, बोलने के लिए, पार्टिसिपेट, एंगेज करने के लिए. सो व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड एंगेजिंग विद द अदर्स,
she gave that boy a star, a smiley on classroom engagement. Now, and similarly, the other teachers also noticed, so they gave smileys for other reasons. At the end of it, the child had the maximum smileys. So he got the Good Folks Smiley badge. I saw a transformation in the child. Overnight, the child started feeling that I'm looked at, I'm cared for, I'm noticed in the class. And then the child started behaving, interacting with all the students. And today, the child is one of the favorite students in the class. So that's the impact of recognizing and rewarding effort. Monica, next slide. Very true, Roshni. So we don't answer the questions first, Monica? Okay, ma'am, you can take the questions. Or should we, or let me close with this. So as a nutshell of this entire program, it is very important that you care for students. You are actually the nation builders. So you are doing a huge job. It's not only about teaching maths or English or physics in the classroom. You are designing the future of people. So create your lessons thoughtfully. Plan things properly so that your lessons are more engaging, more nurturing for the child. And important, connect with the children. Find opportunities to connect with the students and communicate. Please talk to your children. Your children come to listen to you the way you teach, the way you connect, not for the subject competency at all. May I tell you, Google has so much of information. Google के ऊपर इतने वीडियोस हैं कि जो भी आप पढ़ाने की कोशिश Yeah, so there could be some technical problem, and but ma'am will join us shortly. In the meanwhile, आप जैसे कि हम लोग हर वेबिनार के एंड में एक फीडबैक लेते हैं, आप लोग प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय को कि वो फीडबैक फॉर्म कर दे हम समय का उपयोग करते हुए, and ma'am will join us shortly. Yeah, So please let them begin with the questions. yeah, so you can just give your feedback of the session, and then we'll continue with ma'am's session. Okay. Uh, So ma'am is ma'am, back. I have shared the certificates of 2 teachers. Sure. Okay. So one more minute, and we will close this feedback, and we'll continue with our session. Okay. I hope. Debashri, you can read the question. I'll answer accordingly. Sure. No, ma'am, this is just a feedback session, which we usually do at the end. But because of Okay. this technical problem, we thought we can just shift it here, and we'll continue with our session. I hope everybody has answered given their rating for the session. So yeah, ma'am, over to you, please. Yeah. So I'll take the questions now. So those, people who have questions, Debashri, you can read the question for me and I could answer. Sure. मैम जिनको भी क्वेश्चंस लेने हैं, हम लोग आप हमें बता दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे. यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन टू मैम और पोस्ट इट ऑन द चैट.
जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से आप मैम को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप चैट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सो आप हमें बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे, बिकॉज वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी मैम से ये सेशन के यूजफुलनेस पे बात करने के लिए। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि आप इसका आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस। अभिषेक पाठक, आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि एक प्रिविलेज है हमारे लिए टू हियर इट फ्रॉम मैम। सो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। Abhishek Pathak, you can unmute yourself and speak, please. अभिषेक पाठक, पूजा यादव, सुजीत पाटीदार, मुनमुन सिंघल, या आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। Yes, let's begin. I mean, या मैम, there is a question from Mr. Ranu Kumar Jain, who has okay. posted a question in question and answer. How can we reduce screen time using reduce screen time of children? Right, sir? If I could understand your question, you have written how can we reduce screen time using screen time, but I believe you mean here that reduce screen time of children. Okay. Well, in my own school, I have been advising teachers not to use smart class just because you have to use, not to use technology because you have to use. Use technology only where it is supporting your child's teaching learning process. जितनी कोशिश कर सकते हो, you as a human, there is no replacement. No AI software, no anything on earth can replace you. So if you have to reduce your screen time, you have to find ways by which you are engaging with your students in other ways apart from the teaching time. अगर आप उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो बच्चे को आंसर्स नेट से नहीं मिलने वाले, बच्चे को वहां पे देख के नहीं कोई क्वेश्चन आंसर मिलने वाला। बच्चे को आंसर मिलेगा सोचने से, या तो कोई बुक पढ़ने से, या तो रिसर्च करने से। So इसलिए it depends on you as a teacher how you decide your teaching lesson plan. If you make sure that every day मैं आके स्मार्ट क्लास ऑन करूंगा और बच्चे उसको देखेंगे और फिर मैं पढ़ाऊंगा, वो it is a flap, it is a flaw at your teaching learning practice. You can only modify, छोटी छोटी चीजों से आप modify करो, दूर हटने की कोशिश करो टेक्नोलॉजी से, और अपना प्रेजेंस लाइव लाने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीजों के साथ बच्चों को ग्रुप्स में बनाइए, लेट देम आंसर, ताकि बच्चों को लगे कि हम आपस में इन फेस बात करना ज्यादा पावरफुल है, ना कि ऑनलाइन बात करना। Thank you, ma'am. Ma'am, the next question is, teacher Shweta Kalia has asked, sometimes you feel you have been very tired of being empathetic, firm, and friendly, but still the children are not getting motivated to study. What to do in such situation? See, as a teacher, I'll also come to that. You sometimes need to, behave. एक होता है, उसका हिंदी में मुहावरा है, लेकिन मुझे वो मुहावरा पूरा आता नहीं है, but it says that sometimes you have to use empathy,
Sometimes you have to use listening skills, but sometimes it is very important that you realize that you are the teacher in the class. You have the power in the class. So it is for you to take control. And this thing is that be firm. I'll tell you one way we make mistakes. I go to a classroom, and in my class, I tell everybody, sit quietly, sit, do everything fine, everybody. Nobody will go stand without raising the hand, or nobody will answer without raising the hand. Then you come to a substitution period. In the substitution period, every child gets up wherever they want to go, and they come back here and there. So you allowed that. Now the child knows that I'm allowed to do certain things in this teacher's class and not allowed to do this in certain period. You can say to yourself that this is my substitution period. Ma'am, you need to be consistent with your behavior. एक टाइम पे आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाओ, एकदम बिल्कुल हार्श हो जाओ, ये नहीं चलेगा. एक कंसिस्टेंसी अपने बिहेवियर के अंदर लाइए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और चाहे वो छुट्टी टाइम हो, चाहे वो मॉर्निंग टाइम हो, एक बिहेवियर अपना रखिए. प्लीज अलग अलग बिहेवियर्स मत रखिए कि आज हमारा हाउस मीटिंग पीरियड है तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे ना. यू आर अ टीचर. You can be friendly, but not friends. So don't cross your line. And even if you have crossed, even if you have done it, it's always time to change yourself. अपने बिहेवियर में आप अपने ऊपर पहले वर्क कीजिए, अपने ऊपर कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर लाइए. और जब आप देखोगे कि जब आपकी बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, आपके जो तरीका है बच्चों के साथ डील करने में, उसमें कंसिस्टेंसी है, बच्चा अपने आप समझता है कि माय टीचर मीन्स बिजनेस. That's it. Right. Thank you, ma'am. Do we have any further questions? Sarabjit Kaur ma'am, आपने अभी भी hand raise किया है. अगर आपका कोई question है, please हमें बताइए. Rest, I think, okay, we have one more question, ma'am. Yeah, please. This is from Mr. Rajashekhar. Okay. Some students learn effectively in the teaching time, but after some times or day or tomorrow, they cannot remember. How can we rectify this, ma'am? Okay. One thing that I would advise is that as teachers, इसलिए मैं कहती हूँ पहले जो स्कूल के पहले 3 दिन होते हैं ना, पहले 2 दिन 3 दिन, इनफैक्ट पहला दिन ही डिसाइड कर जाता है जो आपने करना है. सो पहले मैं इसको आंसर करती हूँ. तो आप अपने बच्चे को टीचिंग स्किल्स सिखाइए, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग हाउ टू लर्न. पहले ये सबसे जरूरी चीज है. आप नेट पे जाओगे ना तो एक काफी प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट वर्कशॉप्स होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न. एक ये ऑनलाइन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का. उसमें अगर आप देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि बच्चों को एक्चुअली पढ़ने नहीं आता, इसलिए उनकी रिटेंशन कैपेसिटी लेस है. अगर आप बच्चों को सिंपल थिंग, अगर एक माइंड मैप बनाना सिखा दें, कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वो सब करने की जरूरत नहीं है. कोई भी ग्राफिटी टाइप बना दे जिसके अंदर वो चैप्टर का एसेंस आ जाए. उस बच्चे को बोलो ये पेज को देखो. Every day only spend 5 minutes to look at the page. So when the child is looking at the page, he is recapitulating everything that you have taught. So that's a very powerful way of making sure the child is sustaining what you're teaching in the classroom.